business plan, and prototype developed and way forward plan. Being the Mentor Institute, we welcome the students as well as the faculties of our Mentee Institute, Teerthanker Mahaveer University, Moradabad. First of all, let me welcome Dr. Manjula Jain, Associate Dean Academics and President IIC TMU. I welcome you, ma'am, at this forum. Dr. Gitanshu Davar, Convener IIC TMU, and other internal members of IIC TMU Moradabad. I also welcome our Director, Professor Parag Jain, Professor Ajay Singh, President IIC RIT Roorkee, Professor Gaurav Chaturvedi, Dean Academics and Innovation Activity Coordinator, Mr. Amit Kumar Rawat, Head RIT TBI and Startup Activity Coordinator, and other internal members of IIC RIT Roorkee. Today, we are here. We have an experienced personality, Mr. Jimmy Jain, sir, with us. I welcome you, Mr. Jain, for this program. So, Mr. Jimmy Jain, he has got a lot of experience, and he's, I mean, at the client list of various institutions like Kotak Mahindra Bank, JP Morgan Chase headquarter at New York, ICIC Prudential, Future Generali, Bajaj Fin Service, Mahindra Finance, Tata Motors, and so on. So he has got a lot of experience in fields like, SME in NPS and he's working on other simulation techniques as well. His experience also includes in Mahindra and Mahindra Limited, NIS, Sparta, and Adeco. So I welcome you, sir, and let us have our session with Mr. Jain. Thank you. Thank you. Looks like Dr. Gitanshu also wants to say something. Ma'am, do you want to say something? Welcome, sir, on behalf of Teerthanker Mahaveer University. Thank you. And we are looking forward to a very insightful session. Insights to participants hi batayenge. All right, very nice. Okay, was there a mandate given to the students that they can't put the videos on? No, sir, nothing like that. Nothing like that. All right, fantastic. So let's start. Good afternoon, everybody. And if you can hear me, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और अगर आपको मेरा वीडियो भी दिख रहा है, तो fastest fingers first. अपने chat window में जाइए and write A for audio, V for video. So that, since we are virtually connected, I will come to know you can see me as well as you can hear me. रेनू रानी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Fantastic. So I can see most of you can actually hear me as well as can see me. Thank you. Thank you. Lovely. Let me start sharing my screen and then we'll probably move forward. A quick check. Is my screen visible? Can somebody please? Yes, yes. Fantastic. Perfectly visible, sir. Perfect. So I'm stopping the sharing of the screen. And I want to ask the students, each one of you, I can see there are close to 100 plus people in the session, 126 almost, including all the faculty members. It is said that the attitude of gratitude is the best attitude. So thank you so much for inviting me to interact with the students. This is what I really enjoy doing. And there are two ways in which we can make this session run. One way, and this is I'm asking the students, one way is I can keep on telling you whatever it is. मैं आपको एक तरफा ज्ञान देता रहूंगा कि ऑनलाइन रिपोजिटरी कैसे बनाएं, प्रोटोटाइपिंग कैसे करें, बिजनेस प्लानिंग कैसे करें. सेकंड पार्ट इज और सेकंड मेथड इज कि आप मेरे को अपने सवाल बताएं एंड देन वी विल आंसर इट एज वी मूव फॉरवर्ड. सो बताइए कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे? यू कैन राइट इन द चैट विंडो. डू यू वांट me to continue to talk and I can give you whatever the concepts are? Two is, along with the concepts, I can also ask, you can also share your questions with me. So which option will work for you? Which option do you want to exercise today? First या second? शीतल बोल रही सर हमें तंग मत करो, खाना खाया अभी हमने, हमें कोई सवाल नहीं पूछना, आप बता दो जो भी है. मोहम्मद अशरफ से second option. Second. Okay, 126 people, only 3 responses.
एक ना डॉक्टर अरुणा भट्ट, मेरे को प्लीज वो स्लाइड्स दे देंगे? Yes, sir. Just a second. कहीं अगर मेरे को somewhere I will have to put the participants on mute and unmute, so I will be able to do that. Yeah. All right, fantastic, sure, thank you. Because वो तो मैं mute नहीं कर पाऊंगा उनको. Okay, so I think let's start. And I'm a firm believer of energy. Now, when I say I'm a firm believer of energy, we are geographically spread, and I can see a lot of people are raising their hands. We will come to each one of you. You may not be right now. Mohammed Altamash, can you please put yourself on mute? Yes, thank you. Thank you. So let's move forward and let's start talking about. We have a short time. Almost 10 minutes have already gone of the session. What I'm going to do is I'm going to keep this in a free-flowing conversation. I'll add concepts and I will ask you the questions as well, and you can always ask me the questions, right? Insha, ये तो बहुत अच्छी तस्वीर है आपकी. कोई बात नहीं, इंशा हो जाता है. अभी आप एक काम कीजिए, मेरे को होस्ट बना देंगे तो सब चीजें खत्म हो जाएंगी. Five participants have raised their hand. Sir, you already co-host. Oh, yeah, I'm already a co-host. Okay, let me just check if I can unmute and mute people. Let me just check. Yes, thank you. So I'm putting everybody on mute. In case if you wish to talk, you can always unmute and talk. Right, so let me start sharing my screen so that, yes. Okay, now what I've done is I have bifurcated the three things: the online repository, business plan, as well as the prototyping. Now, as I said earlier, I'm a firm believer of energies. Okay, मुझे लगता है मुझे वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि पार्टिसिपेंट्स अपने आप को अनम्यूट ही ना कर पाए. Okay, give me 1 minute. Okay, there are a lot of people who are waiting. I've admitted all. Right. Okay, so I've given an option that you cannot unmute yourself. In case if you wish to speak, write in the chat window and I will unmute you. Right? No problem, Insha. It happens to the best of us. So coming back to our conversation, I have bifurcated the complete topic into three parts. What do you think an online repository is? What is a business plan? And what could we do as far as prototyping is concerned? And then how do we take care of all this? How do we bring this together? Having said that, even though we are geographically spread, even though we might have had lunch already, even though some of us are actually in a screensaver mode, but what I would want you to do is, I would want you, wherever you are, just close your eyes, sit comfortably. There is something which we take for granted, which is our breathing. Let's focus on that. And don't worry, we are not going to do any meditation. चाहे आप कुर्सी पे हैं, चाहे सोफे पे हैं, चाहे बेड पे हैं, जहां भी बैठे हैं आप, कृपया अपनी आंखें बंद कर लें and focus on your breath. And let's do this together. 7 times we'll consciously breathe in and breathe out, starting now. Keep your eyes closed. कृपया अपनी आंखें बंद रखें and ask yourself, you are going to give the next hour and a half of your life to this session. You're going to put your energy, your effort to this program. Needless to mention, when you invest something, you always look for returns. So what kind of returns would you like to give to yourself? What kind of returns you would like to give to your batchmates, to your colleagues, to your other students who have logged in? You are checking in into the session right now. और अगर मैं आपसे पूछूं, वो एक क्या शब्द हो सकता है जो आपकी अभी की मनोस्थिति को बयां करे?
what would that be? What would be that check-in word? Stay with these thoughts for about 15 seconds. You may want to rub your palms. Make a nice cup of those palms. Put them on your eyes. And we'll restart. And let's restart. Good afternoon, everybody. How are you feeling right now? Feeling good? Okay. Now, it's also important for you to understand that if you do not trust the messenger, you will not trust the message. Even though ma'am has shared few things about me, let me tell you what else do I want you to know about me, and then we will move forward from here. Now, this is me. This is how I introduce myself. My belief is life is like an open book. There are three main chapters: my work life, my education, and my personal life. I will open all three chapters in front of you, post which feel free to ask any questions you may have about me. Or remember, this is time you can ask questions about me. Otherwise, it's all about you and the topic. So I started my career in a shop floor. I was in the quality control function in the manufacturing sector. Moved into different functions of manufacturing. From there, consciously moved into the world of sales and marketing. And I was working for Mahindra and Mahindra. And while I was doing so, I realized that what I really love doing is standing in front of people and talking. Not like a politician, but like somebody who can help you to reach where you wish to reach. And way back in 2004, 2005, from my functional role, I moved to this side of the fence, moved into the world of learning and development, training, consulting, and coaching. And today I work with people across the globe, across nationalities. And I work for a company called Square Circle Consulting. We are headquartered at Mumbai. We have offices at Dubai, London, Yerevan in Armenia, and in Denver in US. So that's as far as work is concerned. I will not get into the specifics. If anybody wishes to, we can actually discuss offline. Part two, my education. I'm just about to complete my doctorate. So next time, probably when we meet, I will say my name is Dr. Jimmy Jain, but that's work in progress. I will still say. Did my post-graduation from IIM Kozhikode in operations and marketing. And as they say, life is always a full circle. So the college where I studied my MBA, today I go and teach there as well. So life is always a full circle. So kismat badalte der nahi lagti. And did my degree in management from Bangalore. I also did my diploma in engineering. Work very closely with the Forbes Coaches Council. I'm one of their thought leaders. Gets regularly published at Forbes. But all this I say is a formal education. I will rely more on the experiences which we have gathered over a period of time. There are a lot of you who are experienced, right? For example, there are a lot of faculty members here. Now, my submission to all of you is, as we are talking of any concept, wherever you feel you may want to add something so that we all can learn together, feel free. Just let me know. I'll unmute you and you can speak, or you can write in the chat window as well. Part three, my personal life. I come from north part of India. I'm born and brought up in a place called Chandigarh. That's my hometown. That's where I did most of my early education. Then I lived in Bangalore for a long time. Now I live in Mumbai. And right now I'm again traveling. I'm right now in Chandigarh. I came here yesterday. That's where I'm relaying this live to you. I authored 4 books. 3 of them are on design thinking. And one of them is on how do you, which is one of the latest one is about how do you design an amazing life for yourself. I'm a long distance runner. I also play tennis. Now, I want to tell you something very interesting, and this is important for us before we get into the main topic for the day. When I did my MBA, उस वक्त मैं चाहता था कि the world's के best school से MBA करूँ, Harvard से या Stanford से. लेकिन शायद उस वक्त जो हालत थी, maybe you can say the circumstances or maybe the opportunities which were there, वो मैं नहीं कर पाया. और लेकिन मैंने वो छोड़ा नहीं उस थॉट को कि yes, I have to go to Harvard. It took me 16 years
from the day I decided that I have to go to Harvard, and I actually walked in. And when I was walking in the Harvard Business School in Boston in USA, मुझे suddenly एक चीज realize हुई कि when you dream and when you hold on to your dreams have a funny way to come true. So the first thing which I would want you to take away from today's session is dream and hold on to that dream, because before you could realize, your dreams will come true. So that's the first thing which I would want you to take away. Now आगे बढ़ने से पहले any questions about me? क्या मेरे बारे में कोई सवाल है तो प्लीज अभी पूछ सकते हैं आप, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं. If there are no questions, you can always go to the chat window and write GTG. GTG का अर्थ होता है good to go. जिमी बहुत बोली आपके बारे में, अब आगे बढ़ते हैं. इंशा बोल रहे सर बहुत हो गया आपके बारे में, चलो चलते हैं आगे. डॉक्टर गीतांशु ने बोला चलो चले आगे. Fantastic. Let's move forward. And what I would want you to do is, I would want you to open your mobile phones and we will go to mentee.com, MENTI. Let me share that screen with you. अपने अपने मोबाइल फोन है आप सबके पास? Yes, इंटरनेट इनेबल्ड है? आई एम श्योर जरूर हैं. तो mentee.com खोलिए. MENTI. मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ, उसमें कोड दिया हुआ है. वो कोड आप उस स्क्रीन पे ऊपर डालेंगे तो आपको एक क्वेश्चन सामने आ जाएगा आपके. लेट मी शेयर दैट. यस, ये मैंने स्क्रीन शेयर किया है अपना. एंड आई वुड वांट यू पीपल टू आंसर दिस. व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सेशन? कोड इज 98941367. It'll come right there in front of you. या और मैं एक काम करूंगा, इस कोड को ना कॉपी करके आपके चैट विंडो में भी डाल दूंगा. गो टू mentee.com. उप्स सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई. नो प्रॉब्लम. या 98941367. What are your expectations from this session? आप क्या चाहते हैं इस सेशन में हो, क्योंकि आप अपना कीमती वक्त इस सेशन को दे रहे हैं. जो भी टॉपिक है आप हमेशा गूगल पे जाके उसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम में आए हैं तो क्या चाहते हैं इस सेशन में, क्या सीखना चाहते हैं? What are your expectations? और जैसे आप आंसर करेंगे हमारे सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएगा. मैं लिंक को चैट विंडो में भी डाल रहा हूँ. ठीक है, इनकेस अगर आप मेंटी पे नहीं जा पा रहे, सीधा चैट विंडो में जाइए, उस लिंक को क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे आ जाएंगे. ओके, सो वी हैव गॉट द फर्स्ट रिस्पांस. लर्न न्यू, समथिंग न्यू. ओके, लर्न समथिंग न्यू. ओके, इंटरेस्टिंग. What about others? I've got some more responses, 2 responses which says something to learn, new skills. I'm waiting. Maybe I'll wait for about 30 seconds. Let's see. With close to, how many of us are here right now? 164 of us. सिर्फ 3 रिस्पॉन्स, बहुत नाइंसाफी है. To learn some new skills, motivation. Okay. Anam, can you, Anam Zaidi, आपने लिखा some experiences, some new skills. Can you write that on Mentee as well? Okay. सिर्फ 4 लोगों ने रिस्पॉन्स दिए हैं.
160 170 में से। तो अगर आप लग रहा है कि आपको ये टिपिकल वो क्लासरूम सेशन है कि जहाँ पे फैकल्टी आएंगे और आपको बता के चले जाएंगे, तो ये वैसा सेशन नहीं है। Knowledge is universal today. You don't have to come to a classroom to learn, by the way. That's my thought. But if you come to the classroom, make best use of that time. Confidence to expose. Confidence to expose, मैं समझा नहीं. About prototyping, yes, by which we get knowledge. Okay. चलिए कुछ responses आने शुरू हुए हैं. I'm just waiting for some more time. Last 60 seconds. Please अपना expectations यहाँ पे लिखिए. Motivation, something new to learn new skills by which we get knowledge, but prototyping, okay. Okay, so 10 of us have responded. At least we have crossed 6% in terms of responses after the total number of people. All right, no worries. Last 20 seconds and then I'll remove this. Okay, up. What I'm going to do is I'm going to refresh. Okay, let me wait for some more time. Some more responses are coming. And then I'll tell you what to do next. How to always be motivated. Okay. Expectations. All right. अब एक काम करते हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आप सबने मिलके ये वर्ल्ड क्लाउड बनाया है. मैं अकेला नहीं बना सकता था, आप अकेले नहीं बना सकते थे. सो वी डिड समथिंग कॉल्ड व्हाट वी हैव को-क्रिएटेड. अब मैं स्क्रीन को रिफ्रेश कर रहा हूं और उस स्क्रीन पे क्या होगा, मे बी विल स्पेंड अनदर 1 मिनट ऑन दैट, कि आपके क्या सवाल हैं जो आप चाहते हैं जिनका आंसर दिया जाए इस सेशन में. What are, write all your questions you wish to get answers for. आपके मन में कुछ सवाल हो सकते हैं, कुछ शंकाएं हो सकती हैं, that you know what you are looking for answer for this particular thing. जो भी है आपके मन में, आप यहाँ क्वेश्चन लिख दीजिए. Go ahead, because some of you had mentioned that yes, we would try to go with the option number 2, wherein you will ask questions. Time for you to put. आप हिंदी में लिख दीजिए, अंग्रेजी में लिखिए, absolutely no worries. Mukhtar, please write in the chat window. Write down all your questions you wish to get answers for today. आज जिन जिन क्वेश्चंस के आप जवाब चाहते हैं, ये मेरा बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन है ये. हाउ टू बी ऑलवेज मोटिवेटेड एंड ग्रेटफुल. ओके, हाउ टू फोकस ऑन आवर गोल. ओके, लिख डालिए आज जो भी सवाल का जवाब चाहते हैं, आज मौका है. How can we be so confident and motivated? All right. About the process of prototyping and how to make successful prototype, which can be. Thank you for this question. ये तो मुझे लग रहा था सब off topic questions ही आ रहे हैं. How to hold and pursue your dreams. Okay. Interesting.
अंजलि रस्तोगी लिख रही है हाउ टू इम्प्रूव पब्लिशिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. ऑलराइट अंजलि जी, जरा प्लीज mentee.com पे जाके लिख सकती हैं, वहां पे रिपोजिटरी रहेगा हमारे क्वेश्चंस का. तो अगर आप देखेंगे इन अ वे हमारा लर्निंग स्टार्ट हो गया. हम बात कर रहे हैं ना हाउ डू वी कीप ऑनलाइन रिपोजिटरी. मेरा चैट विंडो हो सकता है इधर उधर हो जाए, मेरा ये रिकॉर्डिंग अगर मैंने रिकॉर्ड किया या मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मेरा चैट विंडो चला जाएगा. लेकिन जिस टूल के माध्यम से मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ ये वहीं पे रहेगा, मैं सेव कर सकता हूँ. I'll be able to keep the repository for this, which I can use for reference later. Okay, how to build positive attitude. Interesting. 6 सवाल और 162 participants. How to improve self confidence and public speaking. Okay. I'm waiting for some more time. Dr. Bhatt, matlab, I see a lot of students joining now. I mean, do we allow that? कभी भी students आ सकते हैं? Sir, actually the timing was 2 o'clock. We allowed them for 5-10 minutes more, but there are others, some students who are joining right now. I think I should stop admitting them because they create a lot of confusion and disturbance in between. Yes, yes. वही पूछ रहा था मैं आपसे. हाँ नहीं सर, मैं stop कर रही हूँ. I am stopping. ठीक है, ठीक है. Megha ji, if you can also write that in the chat, in the mentee, please. Mentee meter, how to improve communication skills. Because what I'm going to do is I'm going to refer to all these questions before we close the session. So let me spend another 30 seconds on this. अपना अपना सवाल लिख सकते हैं please. जो भी आप आंसर चाहते हैं आज. अनम नईम, आपके लिए भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज मेंटी पे जाके लिख देंगे तो मुझे रेफर करने में आसानी हो गई. चैट विंडो में रेफर करना शायद मुश्किल हो जाएगा बाद में. Okay, so looks like most of the students are thinking कि चलो यही सवाल अगर इनके जवाब मिल जाए तो बहुत है. इनमें से except एक question के all of them are different from the topic on what we're going to speak about. But nonetheless, what we're going to do is before we close the session today. Yes, Moin, enough questions. बहुत हो गया sir. Now, before we close the session today, we will revisit these questions. इनमें से बहुत सारे तो आंसर हो जाएंगे as we move on. अगर कुछ रह जाएगा then we will address them then and there. All right, so I'm just switching back to my slide and let's move forward. Let me just quickly share that and let me know if you can see that. Yeah. Okay, so I have started sharing my slides again. Yeah, can somebody confirm? Are you able to see the slides? Either you can write in the chat window, yeah, Y for yes. People who are raising their hands, my request to them is right now, I will not take any questions through audio. Please write your questions in the chat window and we'll address it. And before we close, I'll give an opportunity to speak. Okay, so let's quickly move forward. Now, the first things first, when you are looking at how do you create an online repository, what is a prototype and a business plan, we will understand these three things. Why do we know it? Why? What is the need for us? Why do I do it? How do I do it? And what is that I need to do to ensure that I'm able to achieve what I have to, right? Now, with that, when you look at any of the business idea, and I'm talking about the business plan first, before I talk about creating a repository, because repository मैं उसी का बनाऊंगा जिसके पास मेरे कुछ होगा, right? मैं प्रोटोटाइप भी उसी का बनाऊंगा मेरे पास अगर कुछ होगा, अगर कुछ आइडिया होगा, थॉट होगा. अब जब भी आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, the first part is why are you doing it, right? Because जब तक why address नहीं करेंगे, how और what नहीं निकल के आएगा. और अगर हमने एक बार why address कर लिया, right, तो हमारा how और what निकलना बहुत आसान हो जाएगा. Let me take a very simple example and please write the answer in the chat window. अगर मैं आपसे बोलूं कि कल डेल कंप्यूटर्स जानते हैं हम सब, डेल कंप्यूटर्स को जानते हैं ना? यस, हम सब जानते हैं डेल कंप्यूटर्स के बारे में.
अगर मैं बोलूं कि कल डेल कंप्यूटर्स एक नया मोबाइल फोन लॉन्च करने वाले हैं या एक नई टैबलेट लॉन्च करने वाले हैं, हम में से कितने लोग जाके डेल से वो खरीदेंगे? क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग जाके डेल से वो खरीदेंगे? और अगर मैं आपको बोलूं कि कल एप्पल एक नया आईफोन का वर्जन लॉन्च करने वाला है, हाउ मेनी ऑफ अस वुड बी कंफर्टेबल बाइंग अ फोन फ्रॉम एन एप्पल compared to buying a phone from a Dell? Will you be comfortable buying it from Dell? Yes, no? If you're comfortable with Dell, write D. If you're comfortable with Apple, write A in the chat window. Okay? अगर आप एप्पल लेना चाहेंगे तो आप A लिख दीजिए चैट विंडो में, अगर आप डेल से लेना चाहेंगे तो आप D लिख सकते हैं. Okay, right now I can only see A's. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये समझने वाली बात है कि मोस्ट प्रॉब्ली A. ऑल राइट, शीतल जी बोल रहे मैं तो D से भी ले सकती हूँ. ऑल राइट, फेयर इनफ, बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. ऐसा क्यों होता है? अभी मोस्टली A पे क्यों है? D का सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट ने बोला कि वो D लेंगी. अब Dell is a computer company and so is a Apple. They have access to the same resources, same technology, right? Same market. ये समझने वाली बात है. दोनों कंप्यूटर कंपनी है, दोनों के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वही जो विश्व में अवेलेबल है, वही मार्केट में ऑपरेट करते हैं और टैलेंट अवेलेबिलिटी उनके लिए भी सेम ही है. लेकिन फिर भी हम लोग वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल कि हाँ एप्पल का तो मैं आईफोन ले सकता हूँ, डेल का फोन शायद मैं सोचना पड़ेगा. और उसका कारण सिर्फ एक ही है, द वे दे टेल व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू. तो मैं मे बी अबाउट अ मिनट और सो इस पे और लगाऊंगा. व्हाई विल डिफाइन योर पर्पस. व्हाई विल डिफाइन आप क्यों कर रहे हैं ऐसा. आई मीन थिंक ऑफ इट लाइक दिस. आपसे बहुत से लोगों ने लिखा है मुझे क्वेश्चन कि भाई हाउ डू आई अचीव माय गोल्स, हाउ डू आई स्टे फोकस्ड, हाउ डू आई स्टे मोटिवेटेड. तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है, किसकी जिंदगी जी रहे हैं आप? किसी दूसरे की या खुद की? आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन क्यों चाहिए? क्योंकि जहां तक मुझे पता है दूसरे के कंधे के ऊपर तो जिंदगी नहीं जाती. एंड आस्क योरसेल्फ, व्हाई डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड डू व्हाट यू डू. लेट मी रिपीट दिस क्वेश्चन. व्हाई डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड डू व्हाट यू डू. आप क्यों करते हैं ये, राइट? एंड व्हाट इज द फोर्स व्हिच प्रोपेल्स यू. सिमिलरली अगर आप अपने लिए वो आंसर कर पाएंगे, आप अपने बिजनेस के लिए या आप अपने उस बिजनेस आइडिया के लिए वो आंसर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आप वो वाई लेके, वो पर्पस लेके आप मार्केट में जाएंगे. और एक चीज मैं आपको और बता दूं, हम कोई भी जब चीज खरीदते हैं ना एज अ कस्टमर, वी ऑल बाय, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एक्सट्रीमली इमोशनल. हमें लगता है हम रैशनल तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इमोशनल. और हमने परचेज करने के बाद फिर हम उसको रैशनलाइज करते हैं खुद की निगाह में. एंड व्हेन पीपल आर एबल टू सी देयर व्हाई एंड योर व्हाई इन कॉन्ग्रुएंस, दैट इज अ टाइम दे विल से हाँ मुझे इस बिजनेस प्लान और ये जो कंपनी है ना, इट मेक्स सेंस टू मी. सो आंसरिंग दैट व्हाई पार्ट is extremely important for you, right? When I say why part is extremely important for you, what do I also mean is, if you look at your business plan, and maybe you may want to take a screenshot of this, मैं ये डॉक्टर अरुणा भट्ट के साथ ये पीपीटी शेयर कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आपको अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं. I mean, what is your idea, right? Who is it for? मतलब ये किसके लिए है? आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं किसके लिए है? ये किस जरूरत को, which need of your consumers or so called target market की नीड को ये फुलफिल करेगी, राइट? एंड व्हाट एविडेंस डू यू हैव, हाउ डू यू नो इट? आपके पास क्या एविडेंस है कि हाँ जो मैं आइडिया बना रहा हूं या मैं जो बिजनेस प्लान की बात कर रहा हूं ये दिखेगा ही दिखेगा.
And what would be your next steps? Have I used RWW template? RWW क्या होता है? It stands for, मैं chat window में भी लिख देता हूँ. It stands for real, win, worth. मतलब क्या मेरा आइडिया रियल है? Can I win the idea? Is it worth winning the idea? और बहुत टाइम में क्या होता है, बहुत सारे टाइम पे हमें लगता है कि हाँ, माई आइडिया इज अ विनिंग आइडिया. मुझे लगता है कि हाँ, मेरा आइडिया इज अ ब्रेक थ्रू आइडिया. अगला यूनिकॉर्न तो मेरा ही होने वाला है. Everybody is waiting for this kind of a product, but we don't realize, unless otherwise, we actually engage with our prospective buyers. So जब भी आप business plan बना रहे हैं, right? So you need to ensure that you are able to answer these steps. Why? मैं क्यों कर रहा हूँ ये? Right? Because when you look at the best of the organizations around the world, right? Majority of the organizations, not all, talk only of what they do. For example, मैं आपको क्लासिक केस बोल रहा था between Apple and the Dell. Dell आपको ये बताएगा कि हम कंप्यूटर मशीन बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, हम कंप्यूटर बनाते हैं. लेकिन Apple कभी भी आपको नहीं बोलेगा कि हम मशीन्स बनाते हैं. Apple आपको ये बोलेगा, we help you realize your dreams, fulfill your dreams. Our products are ways and means to make someone achieve their dreams. So वो जो communication है उनकी, वो जो reach है, जो purpose है, that is more important, right? The output वही है, वो कंप्यूटर मशीन बनाते हैं, लैपटॉप बनाते हैं, मोबाइल फोन बनाएंगे, but the way they reach the why and the way they touch the why of the other person. And no wonder कोई भी जब नया फोन लॉन्च होता है तो लंबी लंबी लाइन लग जाती है आईफोन के लिए कि हाँ, मेरा पहला होना चाहिए, and I should be the one to buy it first, because there's a convergence of what the user is thinking and what the company is thinking. That belief is matching, right? Let me take a pause at this point of time and let me see if there are any questions in the chat window. Chat window में तो कोई सवाल नहीं है. Anybody wants to ask a question at this point of time? Let me stop sharing this screen for a moment. कोई शक? We're good. If there are no questions, you can always write GTG so that I know that it's time for me to move forward. अब ये बड़ी असमंजस वाली स्थिति है. गुड टू गो. थैंक यू मोहम्मद अशरफ अंसारी. मुझे लगा या तो मुझे आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक, या मुझे ये लगा कि आप सब लोग शायद लॉगिन करके इधर-उधर हो गए, या मुझे लगा कि मैंने आपको एक लोरी सुना दी है. Okay, let's continue our conversation then. So this becomes the first part of our understanding that हमारा जो business plan है वो हम कैसे बना सकते हैं, और how is it that what I need to do when you talk about making an impact of someone, right? अब business plan के भी कई तरीके होते हैं, right? You can always talk about what if plans. What if plans का अर्थ ये होता है कि अगर हुआ तो, what if it happens, what do I do? Working plan typically talks about the operational plan, मतलब कौन क्या कब कैसे कहाँ पे क्या होगा. Then you can also talk of short-term plans, and then you can also talk of long-term plans. Now, what has happened interestingly in the COVID scenario is especially when people look at businesses, it becomes very difficult for people to forecast. पहले क्या होते थे ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जाता था सबसे, where do you see yourself 5 years down the line? तो मुझे नहीं लगता कि 2015 या 16 में किसी ने भी जो आंसर दिया था और 2020-21 आते आते तक वही हुआ होगा, बिकॉज हमारी सबकी लाइफ ही चेंज हो गई है, राइट? तो जब आप देख रहे हैं ना, बट माय रिकमेंडेशन स्टिल इज, when you're creating that business plan, when you are thinking about that idea, do not think for short term, do not think for 3 months or 6 months or 12 months. For me, you still have the long term range, you should have that long term perspective. And when I say long term perspective, it should be about anything between 2 to 5 years. ऐसा करने वाला हूं मैं.
right? And that's extremely important for us, that we should not become myopic. मतलब मुझे छोटा नहीं सोचना है, मुझे बड़ा सोचना है, right? और जहां तक बड़े सोचने की बात है, there is no tax on the dreams, so dream big, right? So the first part was the business plan. Ab, this is what Simon Sinek has said, that people don't buy what you do, they buy why you do it. And in that why, they see the convergence. And that is where the trust also is getting built, right? And when you look at trust is something which takes time. Organizations do a lot of efforts so that the users can actually start trusting them. And once the trust is established, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद the organization realizes that जो उनके users हैं ना, they only start referring others कि भाई ये कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आपको भी इस्तेमाल करने चाहिए. They start referring it to their friends, family. और ये देखिए, जैसे वो ये कर रहे हैं ना, they are sticking their neck out. मतलब वो अपनी इज्जत को दाव पे लगा के किसी आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं. तो और जबकि आप उनको कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, उसका सेल्स फोर्स को तो पैसा देते हैं ना कि भैया आप हमारे यहाँ काम करते हैं, so that they are able to bring the customers. यहाँ पे क्या हो रहा है? Existing customer एक नए कस्टमर को लेके आ रहा है without any monetary benefits, right? So ensure that we're able to build that trust with the users, with your customers. Easier said than done, right? एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ. Let me stop sharing this screen. हम में से बहुत से लोगों ने ये इस्तेमाल की होंगी वेबसाइट जहाँ पे हम होटल का बुकिंग करते हैं. कहीं पे हम जैसे मान लें घूमने जा रहे हैं, हम होटल की वेबसाइट पे जाते हैं, या मेक माई ट्रिप, या एयरबीएनबी. किया कभी किसी ने? वाई फॉर यस, एन फॉर नो. बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वैसे आज के जमाने में. यस यस, ओके ओके. अब आप ये देखिए कि मान लीजिए हम कोई होटल बुक करना चाहते हैं, ठीक है? तो हम क्या देखते हैं उसमें? और मेरा सवाल जिन लोगों ने किया है मैं उनसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी सी? आई थिंक वी सी दी कौन सा होटल है या कौन सी प्रॉपर्टी को आप बुक कर रहे हैं, वो कितना रूम का रेंट है, उसकी एमिनिटीज क्या है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं. क्या होती है वो? हाँ ठीक है, वैल्यू फॉर मनी. हम वैल्यू फॉर मनी कैसे जानते हैं मोहम्मद अशरफ अंसारी की? हाँ वो वैल्यू फॉर मनी है. किसी चीज से पता लगता है ना हमें, कुछ तो और देखते हैं हम. सर रिव्यूज, बिल्कुल. अब आप ये देखिए, हम रिव्यूज देख नहीं रहे हैं, हम रिव्यू को रिव्यू कर रहे हैं. जरा सोचिए, हम रिव्यू पढ़ रहे हैं लेकिन हम रिव्यूज को रिव्यू कर रहे हैं. अगर रिव्यूज अच्छा होता है, हमें लगता है कि चलो ठीक है, मे बी आई कैन गो अहेड. अगर रिव्यूज अच्छा नहीं है, वी डोंट. अब वो लोग कौन हैं जो रिव्यू करते हैं? आपका और उनसे क्या नाता है? Probably don't know each other, isn't it? Maybe you are strangers to each other. Still we end up trusting them, isn't it? और आजकल बहुत सी डिबेट हुई है Amazon के ऊपर और अदर ई-कॉम प्लेटफॉर्म के ऊपर कि there are a lot of fake reviews also. So that's a topic for discussion on some other day. But ये देखिए हम क्या हो रहा है. तो जो जियो गैबिया है, one of the co-founders of Airbnb, he said, can I monetize trust? उनका आइडिया देखिए कहां से शुरू हुआ. Can I monetize trust? और उन्होंने पूरा बिजनेस का मॉडल, उसके ऊपर पूरा बिजनेस ही बना डाला. And today the value of Airbnb is more than, its brand is valued at more than $100 billion. So trust establish करना बहुत important है. और the easiest way in which I have understood to establish trust with anybody for that matter is when you appeal to their beliefs, when you appeal to them that yes, जो मेरी सोच है, जो मेरा सोचने का नजरिया है, जो मैं चाहता हूं और जो ये चाहते हैं, ये लगभग सेम है. कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस हो रही है. That's where they'll be with you, right? So it's very important for us to understand that business or
प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, प्रोटोटाइपिंग क्या है? बिजनेस प्लान का हिस्सा है। ऑनलाइन रिपोजिटरी क्रिएट करना इज एन आउटकम एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट when you look at real business, it is done with human beings, it is done by human beings. So it's very important for us to understand something called as 3 B's: behaviors, beliefs and business, right? अब ये बिहेवियर क्या होता है? मान लीजिए मैं अभी ये एक पानी पी रहा हूं यहाँ पे, है। अब मान लीजिए पानी की जगह मैं कुछ और पी रहा होता, एज एन एग्जाम्पल लेट्स से समथिंग विच इज एल्कोहलिक, राइट? तो आप क्या कहते थे? एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, होता नहीं कभी ऐसे, पर आपको बताऊंगा, आई हैड बीन अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द सेशंस जहाँ पे ऐसा हुआ था। तो क्या कहेंगे आप? अरे ये तो बड़ी गलत बात है, अगर फैकल्टी ऐसा कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ये तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, राइट? तो और मान लीजिए अगर मैं आपको शाम को 8 बजे मिलता हूँ, ठीक है, म्यूजिक इज गोइंग ऑन, कहेंगे हाँ ठीक है, मे बी जीवी इज एंजॉइंग। अब आप ये देखिए कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कुछ एक्शंस किए। सामने वाले ने अपने वर्ल्ड व्यू के आधार के ऊपर ये कहा ये एक्शन एक्सेप्टेबल है या ये एक्शन अनएक्सेप्टेबल है। मैंने बिहेव नहीं किया, ये समझिए प्लीज। मैंने बिहेवियर नहीं किया, मैंने सिर्फ एक्शंस किया। उस एक्शन को सामने वाले ने मेरा बिहेवियर बना दिया। किस नजरिए से? जिस नजरिए से वो जिंदगी को देखते हैं, राइट? अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो भी आपके बिलीव्स हैं वो आपके एक्शंस में दिखते हैं। आप किसी को जाके ये नहीं बताते हैं मेरे बिलीव्स ये हैं, या मैं इसमें मानता हूं, या मेरे जिंदगी जीने के मायने ये हैं, बट पीपल एक्चुअली सी योर बिलीव्स इन योर बिहेवियर एंड इज द रीजन व्हाई पीपल डू बिजनेस विद यू। बिलीफ के ऊपर थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, और मैं लेट मी गो टू दी चैट विंडो, लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। मान लीजिए दूध उबल रहा है, यू नो, डेली लाइफ एग्जांपल, दूध उबल रहा है और अनफॉर्चुनेटली दूध ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, जिसको हम अपनी कोलोकियल भाषा में बोलते हैं कि हाँ जी दूध निकल गया। सो इज इट अ गुड ओमन या बैड ओमन? शकुन या अपशकुन? क्या कहते हैं आप? जरा चैट विंडो में लिखिए। AP फॉर अपशकुन, S फॉर शकुन। शकुन या अपशकुन? क्या मान्यताएं हैं, जेनरिक मान्यताएं? मिल्क इज बॉइलिंग, मिल्क इज ओवरफ्लोइंग, दूध गिर गया, ओवरफ्लो हो गया, क्या बोलते हैं हम जनरली? ये शगुन है अपशगुन है? कैन राइट AP फॉर अपशगुन एंड शगुन, AP अपशगुन, राइट। मैं भी नॉर्थ इंडिया में पला बड़ा, तो कुछ भी हो, मतलब दूध निकल जाए तो अपशगुन माना जाता है। अब जब मैं महाराष्ट्र में शिफ्ट किया तो वहां मुझे पता लगा कि इट डिपेंड्स। आई सेड व्हाट डू यू मीन, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? कहते देखो, अगर संक्रांति वाले दिन या फिर हाउस वार्मिंग के दिन दूध निकल रहा है, ये अच्छी बात है, इट ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी, अदरवाइज इट इज बैड। अब मुझे नहीं पता कि जो बचपन से मुझे सिखाया गया था वो सही है, जो मुझे अब सीख रहा हूँ वो सही है। बिलीव्स हैं, बिलीव्स आर बिलीव्स, नथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट इट। अब मान लीजिए मुझे बाल कटवाने हैं, राइट? आई वांट टू विजिट अ बार्बर शॉप। मैं सैलून्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो आजकल हफ्ते के हर दिन खुले होते हैं। टिपिकल नाई का दुकान एक हफ्ते में एक दिन बंद होती है ना? कौन से दिन बंद होती है और नाई की दुकान आपके एरिया में? किस दिन नाई की दुकान आपके एरिया में बंद होती है? ट्यूसडे, सैटरडे, मंडे। अब अगेन नॉर्थ इंडिया में पला बड़ा तो यहाँ पे हमेशा ट्यूसडे था, बैंगलोर में काफी टाइम रहा, वहां पे ट्यूसडे था। पर जब मैं मुंबई में शिफ्ट किया 2005 में, तो मुझे पता लगा कि वहां पे मंडे है। मैंने कहा अरे बाबा, ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? जिंदगी में पूरा अभी तक तो मैंने सिर्फ ट्यूसडे बंद देखा है,
आज मंडे बंद हो गया, मतलब समथिंग इज नॉट राइट. बट देन आई रियलाइज कि वेल इट्स जस्ट बिलीव्स. और यहाँ पे किसी लोगों ने सैटरडे भी लिखा है, शायद कई जगह थर्सडे भी होती है. अब कौन सा सही है हमें नहीं पता, बट बिलीव्स हैं. तो जब आप अपना बिजनेस प्लान बना रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट या आइडिया ऐसा तो नहीं है विच विल come in the way of beliefs of people. Am I aware of the geography in which I'm going to operate? Because अगर मुझे वो पता नहीं है, it becomes extremely difficult. मैंने कुछ और सोच के प्रोडक्ट बना दिया and I realized that वो तो किसी ने खरीदा ही नहीं. So it's very important for us to understand the beliefs of the consumer, because unless otherwise the beliefs match, things don't move forward. And beliefs is seen only in the actions. तो आज क्या होता है, 15 साल रहने के बाद मुंबई में मैं ट्यूसडे को चला जाता हूँ किसी दिन अगर मुझे बाल ट्रिम करवाने हो तो. क्यों? फिर मैंने ये बिलीफ चेंज कर लिया कि भाई अगर जो ये लोग यहाँ रहते हैं उनको कुछ नहीं होता ट्यूसडे को बाल कटवाने से, मुझे भी नहीं कुछ होगा. राइट? So this becomes extremely important to understand the geography you're going to operate and what could be the beliefs. You may not know it 100%, but what could be the beliefs of the target audience or your users or your prospective customers. Okay. Now, you need to also understand that जब आप ये business plan बना रहे हैं, जब आप prototyping बना रहे हैं, शायद आप वो दूसरों को दिखाएंगे. दूसरे कौन हो सकते हैं? आपके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं. राइट? तो जब आप ये बनाएंगे ना बिजनेस प्लान और उसके साथ प्रोटोटाइपिंग, एंड आई विल टॉक अबाउट प्रोटोटाइपिंग इन 1 मिनट, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल रिस्क या ऑब्स्टेकल्स क्या हो सकते हैं. स्केलेबिलिटी, अगर मुझे उसे मास स्केल में प्रोड्यूस करना है तो मुझे उसके बारे में पता चल सकता है. और स्टेक होल्डर्स क्या बोलेंगे कि आपने चेक किया ये प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, क्या आपके कुछ फीडबैक है, प्रूफ है. तो उस टाइम पे हम प्रोटोटाइपिंग का बात करते हैं. Now what is a prototyping? Right? Let me quickly check. What is a prototyping? Oops, I looks like मैंने screen sharing वापस बंद कर दिया. Let me again. Prototyping. आपने शब्द सुना है ये prototyping पहले? What is prototyping? And let me go to the chat window. Yes. Saturday also. मतलब 2 हफ्ते में 2 दिन बाद होती है रितिका? Saturday also. Okay, so prototyping. Have you heard of this term prototyping? What is a prototype? अपनी chat window में आप लिख सकते हैं. गूगल करके कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा. That will not help. Because the objective is so that you can learn. Prototyping. What is a prototype? Okay. Prototype क्या होता है? Prototype is nothing but it's a rough model or design. Absolutely. It's a rough model wherein you can make the user foresee कि भाई फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा. अब हम में से कई लोग क्या सोचते हैं कि प्रोटोटाइप इज अ फाइनल प्रोडक्ट. प्रोटोटाइप फाइनल प्रोडक्ट नहीं है. प्रोटोटाइप एक रफ प्रोडक्ट है जिससे आप ये बता रहे हैं दूसरे को कि जब आप इवेंचुअली प्रोडक्ट बनेगा तो कैसा लग सकता है. अब प्रोटोटाइपिंग जब आप बनाएंगे ना, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रोटोटाइप्स यू कैन मेक. लो फिडिलिटी. Let me write that in the chat window also. Right? Low fidelity and high fidelity. Now, what do you mean by low fidelity and high fidelity? मेरा रिकमेंडेशन आपसे ये होगा, जब भी आप प्रोटोटाइप बनाएं, पहले ऐसे प्रोटोटाइप बनाएं जिसमें आपको ज्यादा खर्चा ना करना पड़े. What do I mean to say is that find some stationery, some board, maybe a flow chart, maybe a small video. That's called a low fidelity prototype. High fidelity prototype क्या होगा? जहाँ पे you take a lot of time, effort and investment for the prototype. और low fidelity check करवाइए अपने user से. When the user gives you feedback and say yes, this is something which I'm okay with, you can create that into a high fidelity. Again check with them. बहुत बारी क्या होता है, यहाँ पे ट्रैप हो जाता है. High fidelity is more money. Absolutely, Ritika. High fidelity is more money, more investment. और बाई चांस अगर वो फेल होते हैं आप उस स्टेज के ऊपर, तो it becomes extremely difficult. You actually end up losing a lot of
time, money. अब when you look at prototyping, एक चीज याद रखिए, प्रोटोटाइपिंग की जो फीडबैक है वो इंडिविजुअल को नहीं मिल रही है, वो प्रोडक्ट के ऊपर मिल रही है। और जैसे मैंने पहले बोला था कि लॉट ऑफ पीपल गेट इनटू अ ट्रैप। वो ट्रैप क्या है कि मुझे लगता है कि वो फीडबैक मुझे दी जा रही है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल। नो, फीडबैक आपको आपके प्रोडक्ट प्रोटोटाइप के ऊपर दी जा रही है, राइट? और ये मत सोचिए कि आपने अगर प्रोटोटाइप बना लिया, आपने बहुत टाइम से उसको टाइम लगा के उसको बनाया है, तो आपका यूजर उसको हाँ बोलना ही बोलना है। ऐसा नहीं है। प्रोटोटाइप का मकसद ही यही है कि आप दूसरों से चेक कर रहे हैं कि भाई मैं ऐसा ऐसा कुछ बना रहा हूं आपके लिए, राइट? ये कैसा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कुछ कुछ ऐसा बना रहे हैं जो कॉकपिट में यूज होता है, एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में। आर यू अ पायलट? इफ यस देन इट्स ओके, बट इफ यू आर नॉट अ पायलट, आपको कोई अंदाजा नहीं है कि प्लेन को उड़ाते कैसे हैं, प्लेन को लैंड कैसे करते हैं। लेकिन जब आप प्रोटोटाइप बना रहे हैं और पायलट आपके साथ हो, आपको क्विकली दिखाएं, सर मैम ये हम सोच रहे हैं ऐसा कुछ करने की, आपको क्या लगता है, करे काम चलेगा नहीं चलेगा? सो द प्रिंसिपल बिहाइंड प्रोटोटाइपिंग इज फेल अर्ली, फेल चीपली, सो दैट यू कैन सक्सीड सूनर। और मैंने उस फेल शब्द को चेंज कर दिया है टू लर्न। लर्न अर्ली, learn cheaply, so that you can succeed sooner. You know, prototype is worth 1,000 meetings. हम जितनी मर्जी मीटिंग कर लें, उन लोगों को समझा लें कि भैया हम ऐसा प्रोटोटाइप बनाएंगे, अगर आप प्रोटोटाइप बना देते हैं, it is equal to 1,000 meetings, because people are able to visualize how the end product will look like. So that's something which is about prototyping. अब प्रोटोटाइप, मैंने प्रोटोटाइप बना भी लिया, मेरे को प्रोटोटाइप अभी कहीं रखना है, सेव करना है, राइट? मैंने बिजनेस प्लान बना भी लिया, तो उसके लिए व्हाट डू आई नीड टू डू? वेल, देयर आर वेरियस वेज इन व्हिच आई कुड डू इट, लेकिन आई एम अगेन टेकिंग अ स्टेप बैक एंड गोइंग बैक टू द प्रोटोटाइप. Ask yourself, what is the reason for making this prototype? It can be made to inspire someone. It can be made to catalyze, to act as a catalyst. मतलब किसी की सोच को मैं ना इंस्पायर करना चाहता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिखा दूं उनको, लेट मी सी द रिस्पॉन्स. कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने प्रोटोटाइप बनाया सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड द नीड बेटर, राइट? और कभी कभी मैं क्या करता हूँ कि जस्ट अ वेग आइडिया, मैंने सोचा यार ये ऐसा कभी हो सकता है क्या, और मैंने उसका प्रोटोटाइप बना के यूजर के सामने दिखा दिया. प्रोटोटाइपिंग की कई आइटरेशंस हो सकती हैं. ऐसा नहीं कि आप एक ही प्रोटोटाइप, आप एक ही आइडिया के एक से ज्यादा प्रोटोटाइप बना सकते हैं, लेकिन वो सेम नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो पर्पस डिफीट हो जाएगा अलग अलग बनाने का. तो एक ही आइडिया के अलग अलग प्रोटोटाइप हो सकते हैं, राइट? लेट्स प्रेस अ पॉज बटन हियर. एनी क्वेश्चंस? Let me see if you have any questions, because the way I have put the flow is, in the next 10 minutes or so, we will totally go into a Q&A. If there are no questions right now, everything is clear, you can always write GTG. मैं समझ जाऊंगा कि time for me to move forward. Maybe you're typing your questions, that's okay, I can wait for some time. GTG, all right, thank you Anam Zaidi. Let's move forward, right? तो हमने भी, अगर हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे, तो हमने क्या किया, हमने बात किया द बिजनेस प्लान के बारे में, why your business plan exists, what is the purpose of your being, right? और वो करने के लिए हमने ये देखा कि बिजनेस प्लान के क्या क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं, एंड देन वी आल्सो डिस्कस्ड व्हाट इज अ प्रोटोटाइपिंग. अब हम अगर आगे बढ़ते हैं, अब मुझे ये टर्मिनोलॉजी अगर आप देखेंगे, LMS, DO, या फिर रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म्स, राइट? Now what are these? अब typically if you have to store something, right? मान लीजिए मैंने ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, राइट, जो मैंने किया है, इसको मैंने स्टोर करना है, राइट? इट्स अ डिजिटल ऑब्जेक्ट. व्हाट डू आई डू? मेरे को इसको स्टोर करना पड़ेगा, या तो मैं क्लाउड पे स्टोर कर सकता हूँ, राइट? या मेरा LMS हो सकता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसको मैंने उसके ऊपर सेव कर लिया. तो हमें ये डिसाइड करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंश्योर दैट इट बिकम्स अ डिजिटल ऑब्जेक्ट.
वीडियो बना सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं आप। उसके बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जिसको टूल को यूज किया, मेंटीमीटर, आप इस तरह के टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे और भी टूल्स अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आप उनसे आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप एज ए डिजिटल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। नाउ that has to be synced within LMS. Now why LMS is important? Because I can retrieve it, I can share that with multiple people, right? और उसके लिए when I say repository platform, there could be very many repository platforms. For example, I can create Google gives us this option to create repositories, online repositories, which can be accessed by different people. मतलब एक से ज्यादा लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, अपना अपना प्रोग्राम्स बना के एक जगह स्टोर करते हैं उनको, ताकि एक से ज्यादा लोग उनको शेयर फोल्डर बना के उसको शेयर कर सके। सो टिपिकली अगर आप इसको ऑनलाइन स्टोरेज की अगर बात कर रहे हैं तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आर राइट देयर ऑन योर स्क्रीन। डिजिटल ऑब्जेक्ट, फिगरिंग आउट एन LMS एंड रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म, एंड दे मस्ट इंटीग्रेट विद ईच अदर। तभी आप उसको स्टोर कर पाएंगे, तभी आप उसे री एक्सेस कर पाएंगे, नहीं तो इट इज गॉन। या फिर कहीं होगा बट यू डोंट नो हाउ डू आई एक्सेस इट, या जरूरत के वक्त आपको पता ही नहीं है उसको एक्सेस कैसे करना है, राइट? इट माइट बी सेव्ड समवेयर, राइट? So this becomes extremely critical for us when you look at creation of the online repositories. Ab it is also dependent on the kind of product or service you are using. Sometimes you may have to spend a lot of money, a lot of effort on creating online repositories. Sometimes just bare minimum money what you are spending can also take care of your requirements. By the way, abhi to we are absolutely in the digital era. मतलब मैं कहीं पे भी anywhere I could be and I can access any information from anywhere. So with that, my recommendation would be, do look at various options, what could be the best for you when you are creating any online repository, right? और ये बहुत important है कि जो आपकी जो success होगी ना, what will define it? Even though you may have a lot of skills, लेकिन अकेले skill will not take you anywhere. Meaning the will has to get combined with it. और अगर आप will की हम बात कर रहे हैं तो इसमें आ जाएगा आपका ड्राइव, डिसिप्लिन, अडेप्टेबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। और मैं भी शायद एक मिनट में इसके ऊपर लगाता हूँ। लोग ड्राइव, इनफैक्ट अगर आप चाहें ना तो गूगल कीजिएगा पेंटा डी। लेट मी सी इफ आई कैन गिव दैट लिंक टू यू। गिव मी 1 मिनट, मैं वो लिंक निकाल ही देता हूँ आपके लिए। इट बिकम्स ईजियर फॉर यू to answer some of the things. Okay, मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट विंडो के अंदर। ओके, सो मैंने एक ये फोर्ब्स का आर्टिकल है, मैंने अप्रैल में लिखा था, पिछले साल अप्रैल की बात है, on what is Penta D, a framework which will help you to move forward in life, right? So and if you look at the drive part of it, the discipline part of it, drive matlab why you're doing it. हमने पहले बात किया था आपके बिजनेस का why. It is also important for you to decide your why as well as an individual. क्योंकि अगर आप खुद का why अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो बिजनेस का why को आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, right? Because that is something which will drive you. I asked you earlier, why do you get up in the morning and go to work? I mean, as in work, as in whatever you do, what you do, right? The second part is discipline. It requires a certain amount of discipline to achieve anything. I'm sure आप सबको पता है, आपको पहले भी बताया गया, आपने भी शायद औरों को बताया कि discipline के बिना, things don't move forward. And then comes adaptability. Adaptability क्यों important है? Because it makes me agile. Adaptability makes me flexible. मेरे मन में सोचा कि ऐसे काम होना चाहिए, लेकिन मुझे पता लगा कि नहीं यार, इससे अगर मुझे और कुछ कर सकता हूं तो इससे और अच्छा हो सकता है. So how do I keep myself agile? How do I keep myself active? How do I ensure that I'm understanding what my users or customers is looking for? And the fourth part is authenticity. आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, कोई भी बिजनेस लीडर को ले लीजिए, एक चीज उनकी सक्सेस में जो कॉमन आती है
वो है उनकी वैल्यूज, ऑथेंटिसिटी। जो है वो है, मतलब दे डोंट ट्राई एंड फेक इट, बिकॉज आजकल it's difficult for people to fake, because as I said earlier, knowledge is universal. Knowledge is universal, right? Go to Google, आपको बहुत सी knowledge मिल जाएगी, right? So be authentic on who you are. अगर आपको पता है बताएं, नहीं पता तो बोल दीजिए नहीं पता, I'll figure it out, because we are not superhumans. So be authentic in what you do. Project that in your business. Project that in your ideas. Project that in your pitch, जो भी आप किसी और को बता रहे हैं, right? And these are some things which I thought I'll share with you. And let me spend another, it's almost 3:15. Let me spend another 5-10 minutes on questions. Let me go to chat window, or let me revisit those questions which were asked earlier. And let's see if some of them have to get answered on this. Okay, so a question tha, how do you remain always motivated and grateful? I think one of the things in which I have understood how do we remain grateful is each one of us is actually living someone else's dream. ये बहुत important है समझना. जो भी आपके पास है, whatever you have, right? There are so many others who are actually looking for that only. In fact, जो मेरा latest book है उसका नाम है Deal, Designing an Amazingly Exceptional Life. इसके बारे में बात करती है, being grateful, right? So be grateful for what you have, right? We all have things which we are grateful of. We are also looking for a lot of things which we don't have. लेकिन वो जो है हमारे पास, कृपया उसका जरूर शुक्राना कीजिए, उसका जरूर शुक्रिया अदा करें कि हाँ, I have it, right? So that's the first. I mean, how to be always motivated? Well, as I said earlier, ये जिंदगी आपकी खुद की है, आपके पास कोई चारा नहीं है और to, unless you have to stay motivated. But I would say instead of just motivated, I've written something called as CPMA. CPMA means consistent, positive mental attitude. Now, consistent positive mental attitude means मतलब it has to be consistent. I mean, ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैं पॉजिटिव और कल नेगेटिव हो गया, नहीं. Unless otherwise, you said that कि मेरे को तो निर्वाणा मिल गया, मेरे को कुछ और करने की जरूरत नहीं है. You have to have that CPMA, consistent positive mental attitude, right? That's something which will keep you motivated. How do you focus on the goal? I would say, don't just focus on your goals, focus on your life. Goals become a part of the life, right? And there's an acronym which is there, it's called EPIC. It stands for your emotional well-being, it stands for your physical well-being, it stands for your intellectual well-being. Thoda spelling this error ho gaya, but my fingers are running faster. And then the career, right? Now, हम में से बहुत से लोग क्या करते हैं? We start focusing only on one part of our life, right? But my recommendation is look at EPIC. और जरूरी आपको फोकस हो, डीफोकस होके भी आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं. Which means हम सबको बोला जाता है focus. Yes, focus is important, but sometimes it becomes difficult for us to focus. Now, जब आप defocusing कर रहे हैं ना, आप एक से ज्यादा चीज कर रहे हैं एक साथ, you are good at focusing on multiple things. So that's also a good thing to be. So do not think that you are defocused, right? How can we be so confident and motivated? Well, confidence कहाँ से आता है? Confidence knowledge से आता है. तो knowledge हासिल कीजिए, और अगर आप देखेंगे जो आपको knowledge है, जो आप किसी से भी बात कर रहे हैं, आपकी conviction बढ़ जाएगी. जब आप conviction बढ़ जाएगी आपकी, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला आपको कॉन्फिडेंस देख पाएगा और आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, राइट? हाउ डू यू होल्ड एंड परस्यू योर ड्रीम्स? आई वुड से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल डू ड्रीम. और जब आपने एक बार कोई सपना सोचा है, कोई ड्रीम सोचा है, राइट, होल्ड ऑन टू इट. मतलब थिंक अबाउट इट. अगर मैं आपको बताऊं माय पर्सनल वे ऑफ लुकिंग एट इट, मैं क्या करता हूं, मैं उसको लिख लेता हूं और ऐसी जगह लिखता हूं और वो उसको चिपका देता हूं लिख जहां मुझे दिखता रहे, so that वो मेरे ब्रेन के अंदर चला जाए. My actions actually become like that, right? I think how to build positive attitude, मैं बोलूंगा आपको कुछ चारा ही नहीं है.
नेगेटिव एटीट्यूड बिल्ड करना बहुत आसान होता है। बड़े इंटरेस्टिंग बच्चे मैं आपको बताता हूँ। अवर ब्रेन, चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ आप सबसे। मान लीजिए किसान है, उसके पास दो बीज हैं। वन इज ऑफ फूड विच इज लेट्स से गेहूं का, राइट, और दूसरा है जहर का, राइट। देयर इज अ प्लांट कॉल्ड नाइट शेड, इट्स वेरी वेरी पॉइजनस, लेकिन फूल बहुत सुंदर होता है उसका, पर्पल कलर का। उसके पास वो दोनों बीज हैं और उसने वो दोनों बीज बो दिए। व्हाट विल हैपन? अब आप ये देखिए, द लैंड हैज नो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज अ गुड सीड और अ बैड सीड। खाना क्या है और जहर क्या है, लैंड, जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पता ही नहीं है। लेकिन जमीन के लिए क्या है, वो बीज है। एंड एज दे से, एज यू सो सोशल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, राइट। तो दोनों के दोनों पौधे आएंगे। हमारे ब्रेन के अंदर ये कैपेबिलिटी है ही नहीं है कि अच्छा थॉट कौन सा और बुरा थॉट कौन सा है। उसके लिए थॉट है। तो जितना ज्यादा आप पॉजिटिव बोलेंगे अपने लिए, एनवायरनमेंट के लिए, आप अननोइंगली वो बीज अपने दिमाग के अंदर बोए जा रहे हैं, जो कुछ टाइम के बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम अंकुरित होगा। सो इंश्योर दैट, एज आई सेड, आपके पास कोई मौका, कोई चांस ही नहीं है you I mean to think of negative, because अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आउटपुट भी नेगेटिव होगा। थोड़ा फिलोसफिकल अगर बात करूं तो ये भी कहा जाता है कि हम सब लोग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे, ईच वन ऑफ अस इज वाइब्रेटिंग एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। अब हैप्पीनेस, सैडनेस, दे आर ऑल्सो एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, दोज फीलिंग्स। तो अगर आप अनहैप्पी फील कर रहे हैं, अगर आप उदास हैं, देवदास बने हुए हैं, राइट, तो आप उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं, और जिस फ्रीक्वेंसी पे आप ऑपरेट कर रहे हैं वही फ्रीक्वेंसी आपके पास और ज्यादा आती है। सिमिलरली फॉर हैप्पीनेस, इट्स लाइक हम जब रेडियो को ट्यून करते हैं, रेडियो को, तो हम फ्रीक्वेंसी चूज करते हैं ना, कि हाँ मुझे ये गाना सुनना है, मुझे ये सेशन सुनना है। लाइकवाइज जिंदगी के अंदर भी अगर आप चाहें तो अपनी फ्रीक्वेंसी को चूज कर सकते हैं कि हाँ मुझे इस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करना है, और जिस फ्रीक्वेंसी पे आप ऑपरेट करते हैं वही आपके पास और ज्यादा आती है, राइट। तो सो एज आई सेड, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है नेगेटिव होने का। हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स? वेल, प्रैक्टिस। अंडरस्टैंड व्हाट कैन मेक यू अ बेटर कम्युनिकेटर एंड प्रैक्टिस। हाउ टू मेक इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस, वो तो अलग में एक टॉपिक ही है। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, बाय द नेम जिमी जैन, आपको वहाँ पे वीडियोस मिलेंगे हाउ टू मेक इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस, प्लीज उन्हें देखिए। हाउ टू इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक स्पीकिंग, आई थिंक दोनों आंसर एक साथ ही आंसर हो जाएंगे जब आप वो वीडियो देखेंगे। उसमें टेक्निक्स दी गई हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और फिर भी अगर आप चाहें, इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देता हूं। अगर आप में से कोई भी मेरे साथ टच में रहना चाहे, यू आर मोर देन वेलकम। मेरे लिंक्डइन पे आइए, मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, या फिर ओके शेयर। So this is my contact details. You can WhatsApp to me, you can write an email to me. I'll be more than happy. You can follow me on Instagram. You can always follow me on LinkedIn as well. Right. So this is what I thought I'll share with you today. Thank you so very much, Dr. Aruna Bhatt, for giving me this opportunity. Let's see if students have any questions. Otherwise, we can close. Yeah. Any questions, students? Any doubts? Any queries? Thank you, Sheetal. वर्चुअल सेशन से मुझे एक चीज और सीखने को मिली है कि नो कम्युनिकेशन इज आल्सो कम्युनिकेशन, राइट। सो थैंक यू रूबी, थैंक यू मोहम्मद। सॉरी। Okay, so I'm going to stop sharing my screen. All right. Great. So thank you so much, everybody. Thank you. And आगे बढ़ने से पहले याद है हमने चेक इन किया था, तो अभी हम चेकआउट भी करेंगे। तो जहां पे भी हैं आप, जहां पे भी बैठे हैं, sit comfortably and close your eyes. We'll again consciously breathe in and breathe out.
7 times, starting now. Rewind last 1.5 hours. And as you are checking out, what are you taking away with yourself? आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं साथ? What is your checkout word? Stay with these thoughts for about 15 seconds. You want to rub your palms. Make a nice cup of those palms. Put them on your eyes. And you can open your eyes. Okay. Thank you. Thank you, Dr. Aruna Bhatt. Over to you. Yeah. आप म्यूट पे हैं मैम. Dr. Geetanshu. Yes, ma'am. So can we, start with vote of thanks? Yes, ma'am. If the students are satisfied with the session taken by Mr. Jain. Totally, ma'am. It was a very insightful session, and I think we can proceed towards vote of thanks. Right. Okay. So I extend my sincere thanks to all the dignitaries present here. On behalf of my institute and our mentee institute, TMU Moradabad, I give a, students are still coming. It is now, the session is over. So on behalf of my institute, RIT, and my mentee institute, TMU Moradabad, I give a really heartfelt vote of thanks to our expert, Mr. Jain, who spent his busiest time gracing the occasion. Today, we had the opportunity to hear your thoughts, and this is definitely encouraging us in our future events. Your thoughts have enlightened our minds and shown us a new path. I hope students, they must have got, they must be thinking out of the box now, and they will be getting in touch with you, sir. Sure. So my special thanks to Dr. Manjula Jain, President IIC TMU. My sincere regards to Dr. Geetanshu Davar, who was proactive in responding every time I sent a message or any information. Before I close this session, let me hope that this program can help IIC institutions to facilitate knowledge exchange and resource mobilization between institutions by offering inter-institutional collaborations, and students get benefit from these types of interactions with the experts in these domains. Thank you, everyone being present here. Thank you, sir. And thank you, everyone. Thank you. Thank you. Namaste. Stay safe. Bye-bye. Yeah, you too, sir.